Oh snap! That's a whole Dolaka Express bus chillin' on a sketchy homemade raft in the middle of a river. Man, this is wild. Talk about YOLO. Two dudes up front are straight up hustling with bamboo sticks, while the raft looks like it's one wave away from flipping. Like who even thinks of ferrying a giant bus like that across water on a raft that flimsy? This is some next-level daredevil stuff right here. One wrong move and it's game over, man. Total madness, but kinda epic too. कति हो कति रोइराख्दो रहेछ नि त त्यही पारी नै रोइराखेछ लावा भने आधी घण्टा यहाँ अल्मलिन्छ के हुने मैले गरा लाइभ लाइभ मात्र लान्छ हैन माथि जानु दाजु त्यता पनि प्रोग्राम धेरै राम्रो के छ जयमा बिटी फुटाउने राम्रो सागा बेच जानु भएन सकेन छिर्नु भयो कहाँबाट छिर्नु भयो कटरपट्टि देख्यो भन्नुहुँदैछ उहाँले अस्ति मलाई म रक्सी नखाए म बाइक कुदाउन सक्दिनँ भन्नुहुँदैछ बारी बाटोमा फर्किन्छ भन्नु मैले जस्तो भन्यो त्यस्तै राम्रो शान्त जान्थ्यो आएन उहाँहरू पनि आउनेवाला थियो Damn! These heavy-duty beasts like Hino and Isuzu are gunning it hard, trying to outrun a flash flood coming from upstream. The whole scene's a dusty, rocky chaos. Total mayhem. Drivers are pushing the pedal to the metal. No chill at all. It's like a real-life Fast and Furious, but in the dirt and mud. One wrong move and boom, washed away. Honestly, just watching this gives me secondhand adrenaline. This is survival mode, man. Pure madness on wheels. Holy smokes! That massive sand dredger is getting swept away like a toy boat. The river's going absolutely nuts, and that thing's spinning out of control. Total chaos, man. Nature's flexing hard, and even these heavy-duty monsters don't stand a chance. One wrong step near that mess and you're done for, no cap.
Who would have thought that beast of a machine could just get yeeted by the flood like that? Straight up looks like a real-life disaster movie scene. Oh man, this chunky truck's literally hanging by a thread. One slip and it's game over. Look at the whole squad gathered around, pushing like their lives depend on it. The road's barely wide enough for a motorbike, let alone this beast. Jungle on one side, a ditch of doom on the other, total nightmare. You can feel the stress vibes here, like one wrong push and boom, disaster. This is straight up real-life Jumanji stuff, no kidding. Gari driver kan gari ahas jog ran na sai lo ide edu side te edu telecom han na kan kundi ni na to edu side jam de care group pasivo hey aru agi te phasai dis aru Sheesh! That heavy-loaded truck totally face-planted off the road. What a bad luck day. Good thing there's a beefy crane working overtime to pull it back up. Otherwise, it's staying in that ditch forever. Crowds gathering like it's a live show. Everyone's hyped for this high-stakes recovery. One wrong move and boom, even worse disaster. Man, long-haul trucking ain't for the faint-hearted. This is straight savage work out here.
Dang! That bright orange Mitsubishi truck just nosedived straight into the ditch. Talk about a bad day at work. It's tilted so hard. Looks like it's about to flip belly up any second. The folks standing around look mad stressed, probably trying to figure out how the heck to pull this beast out. Narrow road, fat truck, one more slip, and it's toast. This is some straight-up risky business, man. One wrong move on these roads and it's lights out, no cap. Bruh, this tanker truck straight up flipped on its back like a dead bug. What a mess. The whole thing's crushed. Wheels sticking up in the air like it's waving for help. Driver probably thinking, well, that's it. This ain't just an oopsie. This is a full-on disaster. That curvy road must have done the dirty work here. Anyone driving past gotta be like, yep, that's a hard no. Total wreck. No chance of saving this ride easy. अभी तक कोई रोटी के लिए नहीं पूछने वाला है। अब यहाँ पर जंगल में खड़े हैं चाचा, ना तो यहाँ पर इनको पानी मिल रहा है। अब हम आए तो चलो पानी वानी बाल्टी दे जी भाई, बाकी इनको अभी तक कुछ चाय पानी कुछ मिला नहीं। अभी वहाँ कितना स्पीड में आएगा बताइए? चाहे जितना भी स्पीड में आएगा, लोड गाड़ी है, जब इधर कच्चे में उतारेगा तो गाड़ी पलटेगी कि नहीं? मैं वहाँ तक उतार के फिर संभाला हूँ, इधर नहीं संभाल पाई है। टर्निंग जो है ना ये खतरनाक है। अब इधर से डबल ओवरटेक कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की रात में आवर है, आई थी 2 घंटे के बाद और फिर चले गए। कोई नहीं था, रात भर अकेला जंगल में पड़ा रहा। रात में पुलिस भी नहीं रुकी। एक आदमी दे गया था, वो भी भाग गया। वो वहाँ पे और सब डीएल आके निकाल रहे थे। क्या करेंगे? निकाल रहे थे लोग, क्या करेंगे हम? चलो तुम्हारा वीडियो फेसबुक पे यूट्यूब पे डालो। लोड है, लोड है, है। ये देखो बहुत। That chunky Tata container just dove headfirst into the jungle. Total facepalm moment. The cab's buried deep in the bushes while the trailer's barely hanging on the edge. गाड़ी इधर आए गए। आप बात बताओ कि जोन ड्राइवर पर हाथ उठाए देते हैं मोटर मालिक या अफसर लोग, उनको ये बताओ कि खाली गाड़ी, लोड गाड़ी, खाली गाड़ी तो खाली है। अब बताओ अगर थोड़ा और नीचे चली जा तो मैं जोन 1-2 लोग ड्राइवर कंडक्टर रहा एक को ना बचती। अब इसको अंदाजा आप लगा सकते, देखते हैं नीचे घाट पूरा है। ये देखो कितनी स्पीड हम गाड़ी उतर रही, देखो। इसीलिए कहा जाता भैया देखो सब पूरा घाट है। हम तो इसीलिए भैया रात में नहीं उतरता हूँ, हम तो दिन में ही आके उतरता हूँ। देखो भाइयों,
वीडियो देखने वाले ड्राइवर भाइयों समझ लेना, ज़िंदगी अनमोल है। गाड़ी गुड़ी बन जाएगी लेकिन जान दोबारा लौट के नहीं आएगी। अगर गाड़ी नीचे चली गई तो उस्ताद की बॉडी उठाना भी मुश्किल हो जाते और गाड़ी लाना तो छोड़ दो। अभी देखो इधर से गाड़ी एक आ रही है, ये लोकल गाड़ी